Thank you very much, Ji, for honoring Sialkot Chamber of Commerce for inviting as guest of honor at this auspicious occasion. सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जी स्कैन्स की मैनेजमेंट को फॉर कंप्लीशन ऑफ 25 इयर्स इन दिस फील्ड, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी. और हमारे जी जो सियालकोट से बाहर से आए हुए हैं, सियालकोट की पहचान है. चार्टेड अकाउंटेंट का कोई भी काम हो, कोई मशवरा करना हो, कोई बात करनी हो, तो वी जस्ट कॉल नासिर साहब के लिए इनसे. और हर हमारे सियाल लेदर टेनरी जोन है, मतलब तमाम फील्ड्स में ही इज द वन हु इज लुकिंग आफ्टर अकाउंटिंग. और इसके साथ साथ हम सियालकोट चैम्बर के फोरम से भी कोई भी मशवरे भी हमने सारे मशवरे इनसे ही करने होते हैं. और वैसे मुझे फील होता है कि और चार्टेड अकाउंटेंट सियालकोट में क्यों नहीं आ रहे हैं. ही इज द ओनली वन, मतलब जो हैं शायद वो नजर नहीं आते हैं हमें. तो में आप अपने तो दूसरा जी बच्चे हैं आए हुए, मैं ये बताना चाहूँगा कि चार्टेड अकाउंटेंट की अकाउंटेंसी की फील्ड है, मतलब ये एक सिक्का बंद किस्म की एजुकेशन है जिसके अंदर कोई अभी तक कोई जवाल या कोई कमी या इसकी डिमांड में कमी नहीं आ रही है. और दूसरा आप लोगों को ये जानते हुए शायद खुशी महसूस हो कि जितना IMF ने प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, हमें चार्टेड अकाउंटेंट्स की और ज्यादा जरूरत है. अब इतने ज्यादा हिसाब किताब रखने पड़ते हैं कि वो नॉर्मल बंदे के पास का काम नहीं है. आपके माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों ने आज क्वालिफाई किया है मुख्तलिफ फील्ड्स में, मतलब कुछ ने शायद इंटरमीडिएट किया है, कुछ ने फाइनल किया है, कुछ CA किया है, ACCA किया है. तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. और बेटियां इतनी तैयार होकर आई हुई हैं, लेडी ऑफ द इवनिंग की भी शील्ड हैं जो इतने इतने माशाल्लाह वेल प्रिपेयर्ड हैं. और इस तरह ही बॉय ऑफ द इवनिंग का भी होना चाहिए. तो ये इतनी वेल प्रिपेयर्ड हैं. और कराची में थे, अब सियालकोट में भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं. और हमें ज़्यादा चार्टेड अकाउंटेंट्स की और इकोनॉमिस्ट और जो अकाउंटिंग की फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है सियालकोट में. और यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर इंशाल्लाह जी. थैंक यू वेरी मच. बहुत मुबारक. Respected guest of honor, Mr. Mohammad Awais, and my fellow colleagues from Lahore, Islamabad, Sialkot, and Faisalabad. Respected faculty and our outstanding students. It is my privilege to be here as a CEO of SCANS to welcome you all at this annual function. Today is not just, it's a celebration of dedication, discipline, and the spirit of it. This year has been remarkable because it's a 25th year and silver jubilee of SCANS, Sialkot. Our students achieved exceptional results, many ranking among national and global high achievers. You know, by passing CAF and AFT and whatever papers you have passed, you have showed that you are disciplined, you are hardworking, you have patience, and you have, by your hard work achieved this tremendous. Your mentorship and your passion for the teaching makes SCANS a leader in professional education. Thank you for the standards you set every single day. Thank you very much. What an evening. An evening we have stars everywhere. And I think this marquee has turned out to be a galaxy. A real galaxy today. A galaxy of professional accountants gathered under one roof. Sialkot is lucky and SCANS Sialkot is lucky that we have this number of chartered accountants, ACCAs, sitting together in this annual function of SCANS. This annual function is a bit different because this year we are completing our 25 years
25 years of making professional accountants, 25 years of dedication, 25 years, 25 years of service, 25 years of linkages between industry and academia, 25 years of delivery, 25 years of full-fledged hard work, 25 years of converting the vision of our party, and 25 years of paying back. So this time, our annual function is coupled with the celebration of completion of 25 years of SCANS Sialkot. Of course, we are lucky to have the leader of business community this year, Mr. Ehtasham Mazhar Gilani, with us, President, Sialkot Chamber of Commerce and Industry. We have Mr. Muhammad Awais, Vice President North of Institute of Chartered Accountants from ACC on way. They're just about to enter the marquee. And of course, we have my teacher and Vice Principal of PAC, Mr. Salam, Mr. Zishan Ijaz with us. Another renowned industrialist, Mr. Sohail Masood. Then we have, I think, I was just going through the old pictures, and we are lucky to have the support of one of a very good educationist, nutritionist. Then we have Tayyib Sahab, and of course, on Mr. Asad Feroz with us. We are extremely grateful to have him. Then we have from Faisalabad us. Similarly, of course, we have other friends from ICAP. Of course, Mr. Laik Rana Sahab, and I can see our old student and now qualified chartered accountant, Mr. Adil Naeem, Mr. Fahad, and of course, like I will start. And yes, we have with all this, my fellow teachers, my colleagues, my management team, and last but not the least, my dear students. I welcome you all on behalf of SCANS School of Accountancy. And with this, I also take the opportunity of also Mr. Shahid Khan, Mr. Muhammad Shahid, and Abdul Manan Saab, who is just joining us from Association of Chartered Certified Accountants. We welcome you all, ACCA team, in our function. Thank you so much. The 25 years that I just told you is, in fact, was not an easy journey that you can think of. When I was mentioning this, I had another person entering today in our marquee. What unique in him that what was his journey and what SCANS played the role in his life. So I take this opportunity, of course, to thank my worthy partners, our team being headed by visionary, our worthy Mr. Sajid Hussain, CEO of SCANS Education Limited. It's all his vision, his guidance that we are here today. Then I had full-fledged support who had always been and helped for me. Fahim Saab is not here. And of course, amongst the partners, last but not the least, our partner, Mr. Malik Nasir Ahmad, I have is because of him. I've inherited whatever good is from his side. So I thank you. And this is the reason that we are sitting here successfully and with growth. Similarly, I think I missed Said, of course. I missed Mr. Ahmad Salman here. Then, of course, Rizwan Saab and Anil Peter coming all the way from Islamabad. So we are extremely thankful for your time and for your coming. And it's really an honor for us. And surely the students will get guidance once they will be discussing things with you. It's a motivation for them. I would take this opportunity to thank all my teachers, my management team, because again, it's all teamwork. It's all teamwork that has brought us here. So I think a big round of applause for my management team and for the faculty members who are working day and night. We are really proud of you. At the same time, for the students, well, I want to just say that there is no shortcut to success.
There is no shortcut to success. You are being labeled as Generation Z, but be careful. Yes, you can be labeled something, but you have to be very careful that you don't lose your connection with your past and with your seniors. So yes, you have to move fast. You should be the first mover. You should be the fast mover. But at the same time, again, I would say there is no shortcut to success. So you have to work hard, good management skills, and focus. Once you exhibit that, I don't see any problem in your success. Number two, what I would suggest is that never ever fight with nature. Never ever fight with nature. Allah has made this world with some set rules, and as a student, you must practice from now that you follow that discipline, what actually Allah has given us. The moment you will try to violate that, I tell you, you will be in problem. So some of you might have read that 5 a.m. club, in which we tag all the success. That 5 a.m. club is given to us religiously just to get up and be up before the sun. If you follow that, I think half of your problems will be gone. So I wish you best of luck in your coming endeavors. I again thank all, mention anyone's name. So apologies for that. I can see Shweb Saab here. I can see best of luck and hope that you will enjoy today's function. Thank you very much. Assalamu alaikum. Dear guests, honorable guests, teachers, students, our friends from business community, protocol is already established. Mr. Asad and our other colleagues, they have welcomed you all by name. So I simply endorse that it's a real historic day for Sialkot are with us. So I really grateful, and I'll not take much time. And I honestly believe that every speaker, जो भी दोस्त आया, उसने आपको स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी टिप्स दी. सियालकोट की 25 ईयर्स स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंट्स की सेलिब्रेशन के हवाले से भी बातें हुई. Together, and we discussed this matter with Sajid Saab, Maqbool Saab. The only you see, इसके पीछे जो फलसफा था, जो रीज़न थी, जो बात थी, वो ये थी कि हम देख रहे थे कि सियालकोट में टैलेंट है, क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये लाहौर के एक्सपेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई हमने स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी सियालकोट में इस्टेब्लिश हुआ. और फिर मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हमारा एक स्टूडेंट अभी आपके सामने वो एक स्टूडेंट आए भी और उन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट बैच में था. वो कोटली लोहारा, इट्स अबाउट 17-18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सियालकोट. हमारे कैंपस से वो कोई 17-18 किलोमीटर था. तो वो साइकिल पे, बाइसिकल पे रोज़ाना आते थे. और जब ही क्वालिफाइड सीए इंटर, तो सब उससे ज़्यादा हमें खुशी थी. हमने कहा आज हमारा मिशन जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ा. और माशाल्लाह देन ही क्वालिफाइड एंड जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तो लंबी बात नहीं करूँगा. आपको सीनियर्स ने, ये मैं स्टूडेंट से कह रहा हूँ, बता दिया है कि आपने क्या करना है. आपने अपना एक टाइम स्केड्यूल बनाना है, आपने एक अपनी स्टडीज़ को प्लान करना है. एंड अल्टीमेटली नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. वो बिल्कुल सही कह रहे थे
کہ یہ کانسیپٹ اب بہت پرانا ہو گیا کہ اٹس ناٹ دیٹ وے، بٹ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اگر آپ کریں گے تو. اور آج کے جو وہ اگر میں یہ کہوں کہ بھئی سارا آپ کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے جو میسج ہے، تو یہاں بھی شعر پڑھا بھی گیا، وہ یہی ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بھئی یہ بہت مشکل ہے، ٹائم نہیں ملتا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. تو کیونکہ اسی کے ساتھ ہے کہ اتر گئے ایک آبجو بھی دریا تھی، رکے جو تو ایک آبجو بھی دریا تھی، اتر گئے تو سمندر بھی تا کمر نکلے. آپ نے ایفرٹس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور ایک دفعہ یہ سوچ لینا ہے کہ یس آئی کین ڈو دس. تھینک یو ویری مچ فار یور ایوری باڈی فار یور کمنگ. اور آپ نے کافی ٹائم دیا ہمارے انشاءاللہ اگلے جو آنے والا ٹائم ہے، یہ 25 سال جو ہوئے، جو ہم نے اچیو کیا، جو ہماری کمٹمنٹس آنر ہوئیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی اور آگے لے کے بڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. And now I would like to request Mr. Khalid Nasir to please come on the stage. Due to their brilliance, this camp is here in Sialkot. So thank you so much, sirs. Hurain Nadeem Hussain. These are the AFP High qualified. Hajra Rashid. Abdul Rahim. دو گھنٹے کی چونک چ گھومتا رہا اینڈ چاہے اکل تینوں پھر بھی نہیں آئی. میں تے گھوم لیا تینوں میں پہلے دیکھو کنٹین کی کیسے کھلی ہے یار میں تو وہیں سے لے کر آئی تھی. پڑھاؤ میری بڑا دھوکا ہو گیا، بڑا ہمارا کچھ دھوکا دے گئے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم کیا السلام. کر رہے تھے آپ سب؟ آپ سب کو مجھے دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسکیلز میں پڑھائی بالکل ختم کر دینی چاہیے اور کیوں نہ جیوگرافیکل کمپٹیشن شروع کروا دیں کہ آیا کہ لاہور کا اسٹریٹ فوڈ بہتر ہے یا کراچی کا سی ویو، سیالکوٹ سے یا کراچی سے یا کسی اور شہر سے. لیکن اسکینز میں آنے کے بعد آپ لوگ کی صرف ایک ہی پہچان ہے، وہ ہے اسکینز کا فیوچر پروفیشنل.